Hello students, welcome to the lecture number 8 of the chapter 3. In lecture number 7, we had discussed about the concept and definitions of kites and trapezium. In this lecture, we will discuss about another quadrilateral, that is parallelogram. So let's start with the definition of parallelogram. Okay? So, as you know, a parallelogram is a quadrilateral. So let's draw its figure. Okay, this is a quadrilateral having how many sides? Having 4 sides. So the first condition to be a parallelogram is that the geometrical figure must be a quadrilateral. Okay, so this is the first condition. What is that? That is, it must be a quadrilateral. Understood? And it is how many sides? A, B, B, C, C, D, D, A. 4 sides. A, B, B, C, C, D and D. As you know, any quadrilateral has 2 pair of opposite sides. प्रत्येक quadrilateral ले 2टा pair opposite side थाए. किए देखो AB और DC हो जो opposite pair. Exactly. AD और BC are another opposite pair. So every quadrilateral ले 2टा pair opposite sides थाए. तो ये opposite side ऊपर base करके हमें second condition टा को लिखिबा. Understood? So the second condition in order to be a parallelogram is that the pair of opposite sides are parallel. Again I am saying the pair of opposite sides, that means AB DC and AD BC. These pairs are parallel to each other. Understood? So write it, pair of opposite sides are parallel, right? That means AB parallel to DC because they are opposite sides. So write AB parallel to DC. I am writing the symbol of the parallel. Okay, and AD also parallel to BC. Understood? So write it, and AD parallel to BC. If you want to show the parallel in the geometrical figure, माने parallel टाको हमें geometrical figure जदि हम show करिया को चाहिए, हमें केमते लिख पाइबा देखो, AB parallel to DC, similarly AD parallel to BC. So कौन करिबा और दुईटा arrow mark दबा. Understood? So it shows that these two opposite pair are parallel and these two opposite pair are parallel. This is the second condition. Coming to the third condition. The third condition is the pair of opposite sides must be equal in length. It means the length of AB is equal to the length of DC and the length of AD is equal to the length of BC. So what can you write? The pair of opposite sides are equal in length. माने कौन पूछेला? माने पूछेला कि AB is equal to DC and AD is equal to BC. Okay, write it. AB is equal to DC and AD is equal to BC. So these are the most important and compulsory 3 conditions to be a parallelogram. Parallelogram हुआ पाई ये 3टा condition होची compulsory. जदि कौन से quadrilateral ये 3टा condition को follow करूथबो ताले हमें कोइ परिबा yes that is a parallelogram. बुझियला कि नहीं? या बाद आ किछि ऑप्शनल अछि, ऑप्शनल किछि प्रॉपर्टीज अछि parallelogram रा हम ताको पढिबा. बुझियला? बट मोस्ट इंपोर्टेंटली ये 3टा को प्रॉपर्टी को follow करले जदि कोनसी quadrilateral ता सेटा गोटे हमें parallelogram बोली कहिबा. बुझियला? सो एबे हमें पढिबा ऑप्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द parallelogram. कौन कौन ऑप्शनल प्रॉपर्टी अछि देखिबा. अच्छा ओके ताको ये राइट साइड रे ड्रा करके देखिबा. सो इट इज अ parallelogram A B C D. AB parallel to DC, AD parallel to BC. Okay, now let us talk about optional property of parallelogram. Okay, so the first optional property of parallelogram is the opposite angles
must be equals. Okay, first write it. The opposite angles must be equal. Now, what are the opposite angles? See, this is angle A, and I have told you that the consecutive angles of angle A is angle B and angle D. Angle A consecutive angle किए B और D, but the non-consecutive angle किए C. So A and C are known as opposite angles because they are facing towards opposite sides. Similarly, हमें एंगल बी कथा देखिबा. एंगल बी रा consecutive angle किए एंगल A और एंगल C. तार non consecutive angle किए एंगल D. So B and D are opposite angles. Understood? So the first property is that the opposite angles must be equal. It means angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Understood? Write it. Angle A, this is the symbol of angle, is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Understood? So for symbolical representation you can write like this. Angle A and angle C are equal. Now angle D and angle B are equal. Okay. Coming to the second optional property. The second property is the sum of consecutive angles are equal. Okay. Consecutive angles. What is the meaning of consecutive angles? Here for the angle A, the consecutive angles are B and D. A angle consecutive angle किए B और D. भल रे बुझो. तले A angle consecutive angle हला B angle और D angle. According to the second property, it tells you that the sum of consecutive angles are 180 degree. Okay? It means angle A, its consecutive angle is angle B. तले exact angle मिसी केते ही थिबे 180 degree है. और एंगल ए रो आ गोटे कंजुगेट एंगल किए एंगल डी ताले हम कोन लिख परबे एंगल ए और एंगल डी मिसी की 180 डिग्री हिथिबे. बुझिला कि नहीं? सेकंड हम एंगल बी पाखा बुझिबा. यार कंजुगेट एंगल किए गोटे हो एंगल ए और एंगल सी. अच्छा यदि ए दिरा एंगल को हम कंजुगेट एंगल नियम दे ताले कोन लिख परबा a + b और b + a = 180 डिग्री. ऑलरेडी लिखा है और लिखिया दरकार नहीं. नेक्स्ट एंगल बी रो आ गोटे कंजुगेट एंगल हला सी ताले कोन लिख परबा b + c is 180 डिग्री. बुझिला कि नहीं? ठीक समझिका. एंगल सी पाखु को आसीबा. यार कंजुगेट एंगल किए b और d. अच्छा ताले जदि c और b कंजुगेटिव होन हमले कोन लिख परबा b + c = 180 डिग्री. ऑलरेडी लिखि देछि आ लिखिया दरकार नहीं. नेक्स्ट हला एंगल सी रा आ गोटे कंजुगेट एंगल हला d ताले लिख परबा c + d = 180 degree. Okay. Next एटी क्या सब d पाखो. अच्छा d रो कंजुगेटिव किए a ताले कोन लिख परबा d + a और a + d = 180 डिग्री. जोटा कि ऑलरेडी लिखि छ आ लिखिया दरकार नहीं. d रा आउट कंजुगेटिव एंगल हला c. सो c + d = 180 डिग्री ऑलरेडी लिखा जाय छ. ताले बुझियाला सेकंड प्रॉपर्टी कोन कहला ना दुईटा कंजिक्यूटिव एंगल बा दुईटा पाखापाखी एंगल मानको जदि हम ऐड करिबा दे विल ऑलवेज गिव 180 डिग्री. सो राइट दिस. द सम ऑफ consecutive angles is 180 degree. Understood? Next property is property number 3. Okay, this is the most important property. So let us draw it clearly. A, B, C, D. Since it is a quadrilateral, that means it has how many diagonals? It has 2 diagonals. What are the diagonals? Diagonals AC and diagonal BD. Okay, तार केतना डायगोनल अछि? 2टा डायगोनल. देखि दबा किए किए गोटे हला AC और हला BD. Okay, and this 2 diagonal will intersect each other at a point.
ए दुटा को डायगोनल गोटे पॉइंट रे परस्पर को मीट करूचंती एंड दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज ए पॉइंट रो नेम हैला बुझियला ताले बटन थर्ड प्रॉपर्टी एया हैला कि दुईटा जाको डायगोनल परस्पर को समान दुई भाग रे विभक्त करंती इट मींस द टू डायगोनल intersect each other and they bisect each other. Bisect means they cut each other at two equal halves. See, here the diagonal is AC. Then this diagonal is bisected at the point O. It means if this length is 10 centimeter, then this is 5 centimeter, this is 5 centimeter. Similarly, suppose this length is 20 centimeter, then this is 10 centimeter, this is 10 centimeter. So at the point of intersection, both the diagonal bisect each other. Okay, this is the third property. So at the point of intersection between two diagonals, they bisect each other. They bisect each other. ताले हमें कौन जान ले ना जो पॉइंट रे दुईटा को डायगोनल परस्पर को मीट करूचंती ठीक सही जगह रे ईच डायगोनल दुईटा इक्वल हाफ रे कन्वर्ट हे जिवो ओके दैट मींस AC is bisected at the point O so AO is equal to CO okay you can write it AO is equal to CO. Similarly, this diagonal is also bisected at the point O. So you can write CO, sorry, this is B point. BO is equal to DO. Okay? And BO is equal to DO. Again, I am saying all the three properties. The first property tells you that the opposite angles are equal. It means angle A and angle C are equal and angle B and angle D are equal. बुझियला second property हला कि the sum of consecutive angles is 180 degree. दुईटा पाखापाखी एंगल मान को आमे यदि मिसेइबा केते हबो 180 डिग्री हबो. फॉर एग्जांपल सपोज एटा गोटे आमे पैरेललोग्राम बोली भाबिबा हला सपोज एटा 60 डिग्री गिवन अछि हला ताहले क्वेश्चन मागी थी जे ए एंगल टा केते बाहर करो करि परिबा कि नहीं देखो केमति करिबा हमें जानि छे ए एंगल टा कोन कंसेक्यूटिव तले हमें रूल 2 रे कोन हमें पढिले दुटा कंसेक्यूटिव एंगल को हमें ऐड करिबा केते पाइबा 180 डिग्री पाइबा ताले एतरे को ऐड कर दबा केते पाइबा इज इक्वल केते पाइबा 180 डिग्री ताले x रे वैल्यू पाइबा कि नहीं रे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री बुझियला आकु बेस करके हम c एंगल टा पाइबा केमदिका मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते थे opposite angles are equal so if it is 60 degree then it must be 60 degree if it is x then it must be x because opposite angles are equal understood next the third and most important property is that the two diagonals okay bisected each other at the point of intersection जो पॉइंट से हम परस्पर को मीट करंती सेही पॉइंट रे परस्पर दुई जण को दुई भाग रे समान दुई भाग रे विभक्त करंती understood So now we knew the three most important properties of parallelogram as well as three optional properties of parallelogram. Now based on that concept we will do some problem. Okay, so let's start the first question. The first question is ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Then you have to find the value of x, y and z. Here in this parallelogram x, y and z are three angles. Now we have to find this value. ओके सो केमिति हमें पाइबा को प्रॉपर्टी को यूज करिबा हम जहां भी प्रॉपर्टी पढिया से पैरेललोग्राम रो सेही सब प्रॉपर्टी को यूज करके हम x और z रो वैल्यू बाहर करिबा हैला सो फर्स्ट हमें बाहर करिबा माने करो यार वैल्यू z रो वैल्यू सिंस वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल पढितले कि नहीं जे ऑपोजिट एंगल ओडा इक्वल होबो ताहले देखिलो ए सी एंगल ऑपोजिट एंगल केते एंगल है कि नहीं सी एंगल ऑपोजिट एंगल है कि नहीं yes so write it as we know कौन हमें जानी चाहिए ना angle C or you can say angle A and angle C are equal
रीजन भी लिखा पड़ो कौन पाई बिकॉज दिस इज द सिंबल ऑफ बिकॉज ओके दिस इज द सिंबल ऑफ हेंस ना को उल्टा देले कोन हो जीवो एटा बिकॉज और आपको हम कह परिया सिंस ओके कौन पाई ए और सी इक्वल बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल understood now what is the value of angle A Z and what is the value of angle C 100 understood so this is the value of Z তাহলে এটা যদি 100 ডিগ্রি হবে এটা কত হবে 100 ডিগ্রি भी হবে বুঝিলা তাহলে Z এর ভ্যালু আমি ইজিলি পাই গলে প্রপার্টি ইউজ कर देले বর্তমান বাহির করবা x এর ভ্যালু ହେଲା ଦେଖିଲ या ଭିତରେ कोन रिलेशन एंगल A और एंगल D की प्रकार एंगल कंसेक्यूटिव एंगल के नहीं एंड हमें पढ़ी दिले the sum of the consecutive angles is 180 degree दुटा का एंगल मिलके कितना होगा 180 degree okay so this is the first second thing is angle A plus angle D is equal to 180 degree reason what is the reason because sum of consecutive angles is 180 degree हम पढ़ी दिले कि नहीं okay अच्छा एंगल एटा में कितने पाई गले 100 पाई गले एंगल डीटा कितने x is equal to 180 degree so what is the value of x 180 degree minus 100 that is 80 degree so now we get the value of x देखो कितने इजीली पाई जाउ छे x ର वैल्यू कितने हे गला 80 डिग्री हे गला बुझियला नेक्स्ट के रह गला y ର वैल्यू केमती पाइबा अच्छा this is an exterior angle or not yes this is an exterior angle हो कि नहीं now it is a straight line and this is a line segment based on it okay eta ho joda straight line ta upar ote ray ba line segment अछि tala me janche jehetu ote straight line that means it makes a straight angle and that is 180 degree jehetu ote straight line ta upar ote ray jaichi tale total angle ta kete degree 180 degree okay you can write it AE is a straight line or straight angle on which जहां ऊपर क्या अछि DC stands ताले से एंगल टोटल केते हबो 180 डिग्री हबो कि नै मिसे की ताले कोन लिख दे परिबा 80 डिग्री प्लस y एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री ओके ताले y ର वैल्यू केते बाहिरबो ना 180 डिग्री 80 degree minus है जीवो 100 degree hence the value of y is 100 degree बुझिया कि नहीं सब जगह प्रॉपर्टी को यूज करके बहुत इजीली हमें x y और z ର वैल्यू इजीली बाहर कर दे पारिबा ओके कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 in question number 2 it is given that in a parallelogram ABCD so let us first draw a parallelogram ABCD okay in case of geometry you have to first draw the diagram okay so A B C D then here it is given the angle D is 70 degree okay so this is angle D this is 70 degree next is you have to find the other angles right so out of the four angle one angle is given that is 70 degree गोटे angle दे देला बाकी तीनटा angle रहला ताले हम को एंगल बाहर करबा एंगल ए टा केते एंगल बी केते एंड एंगल सी केते अंडरस्टूड सो लेट अस फाइंड बाय यूजिंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देखो इटे एंगल डी केते 70 एंगल डी रो ऑपोजिट एंगल के एंगल बी बुझिया कि नहीं एंगल बी रो वैल्यू केते आगो एग्जैक्टली 70 हो व्हाई बिकॉज़ वी नो द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल सो राइट इट angle B is equal to angle D why opposite angles are equal okay so angle B is how much also 70 degree बुझियला कि नहीं नेक्स्ट रहला के A और C जदि हम A एंगल टा बाहर कर दवा C एंगल इजीली बाहर जीवो काहे कि ना A और C ऑपोजिट सो A एंगल हम केमती पाइबा देखो A angle with कोन relationship अछि they are consecutive angles so sum of these two angle is 180 degree so second thing is angle A plus angle D is equal to 180 degree reason में लिख देबो कोन ना sum of
opposite angles, sorry, not opposite, some consecutive angles is 180 degree, right? So here angle A is to be find out. Angle D is given 70 degree is equal to 180 degree. So angle A is 180 degree minus 70 degree, that is 110 degree. So angle A ର value हमें पाई गले केते 110 degree. बुझियला ना angle C इजिली बाहर करते परिबा कि नहीं केमिति ना हम जान छे angle A ର value जाय angle C ର value भी there. Why? Because they are the opposite angles. Okay, so right, angle A is equal to angle C. So angle A is 100, so is equal to angle C. Hence angle C is equal to 100 degree. Okay, by using the properties of parallelogram, we find the different angles except D. Okay. So coming to the next question, that is question number 3. In question number 3, it is given that in a parallelogram ABCD. So let us draw a parallelogram. A, B, C and D. Next, here given that OC is equal to 4 cm. What is OC? What is the point O? O is a point at which the two diagonals intersect each other. चला, हम first point करेंगे दूसरा diagonal को परस्पर को intersect करेगा, and they intersect at a point O. This point is O. Okay, so it is given that OC is equal to 4 cm. This is OC. Okay, this is 4 cm. Next, BD. BD means the total diagonal, this diagonal BD. BD is equal to 5 more than AC. अच्छा AC कौन? AC is the another diagonal. ताले BD टा होची AC diagonal ठारो 5 अधिक. बुझियला? Symbolically we can write BD is equal to 5 more than AC. ताले AC जहाँ भी ही थी वो आठु 5 अधिक. So AC plus 5. Understood? BD is equal to AC plus 5 means BD is 5 more than AC. Okay, but we don't know the value of BD neither AC. हमको BD भी जाना नहीं, AC भी जाना नहीं, हमें बाहर करेगा. So find OD. Here you have to find this length OD. Okay, by using the properties of parallelogram. So let's prove it and let's find the unknown value OD. केमिति पाइबा देखो, हमें जानि छे दुईटा को डायगोनल परस्पर को जगह मीट करती, ओ पॉइंट रे मीट करती. ओके, एंड एट दिस पॉइंट ईच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. एई पॉइंट रे दुईटा को डायगोनल परस्पर को समान दुई भाग रे विभक्त करती. इट मींस सपोज एसी टा होय डायगोनल, तले एई पॉइंट रे कोन हेतिबो सेटा समान दुई भाग रे विभक्त हेतिबो, अर्थात यार डिस्टेंस जा हेतिबो यार डिस्टेंस बी से आइतिबो. ताले एटा जे 4 हेतिबो एटा केता हबो? से 4 होगा कि नहीं? बुझियला? So write it at O AC diagonal bisects. Okay, समान दिवार विभक्त हो जाउची. So you can write AO is equal to CO. So कौन है जिवो? AO is equal to CO है जिवो. अच्छा, CO टा केते 4. ताले AO टा केते हबो? 4 cm हबो. बुझियला? Next thing, now we will find the total length of this diagonal. AC diagonal रो पूरा लेंथ रा केते बाहर करबा. अच्छा AC रा कोन लाइन सेगमेंट. So AC can be written as this distance plus this distance. हैला एटा जब लाइन सेगमेंट हुए ताले आको जदि मु एई भाग जगह रे दुई भाग रे विभक्त कर दे ताले मु लिखि परिबिनी जे AB पूरा लेंथ केते हितिबो मन एटा हो 10 cm. ताले एटार लेंथ प्लस एटार लेंथ, एटा मन कर 4, एटा मन कर 6. ताले टोटल लेंथ कोन 4 plus 6. Similarly the total length of this diagonal is this plus this. Okay, so AC can be written as AO plus CO. ताले 4 plus 4 that is 8. Okay, so this is the length of the diagonal AC. तो AC diagonal टा पाई गले. वर्तमान हम जिबा को diagonal कहला BD diagonal केते केमिति बाहर करिबा.
See, there is a relationship among AC and BD. BD और AC रो relationship कौन? ना BD टा AC ठारू 5 अधिक. AC जहाँ भी है दिवो. कितने AC? 8. 8 रू 5 अधिक. ताले कितना होगा कहला? Plus 5 मिसे देगा कि नहीं? ताले इटे को कहाँ लेंथ है दिवो? BD रो लेंथ because BD is 5 more than AC. Okay, AC जहाँ है दिवो ताकि 5 अधिक. So you can write BD is equal to AC plus 5. अच्छा AC वाला 8. AC जगह में कितना पुट कर लिए देखो 8 plus 5. कितना है वाला 13 centimeter. So this is the length of BD. Understood? So the total length is 13 centimeter. Okay. Next you have to find OD. OD means this distance. Similarly, as we know, AC is bisected at the point O. AC टा O point समान द्विभाजक व्यक्त होची. ठीक सेमती का BD भी गोटे diagonal. So this diagonal is also bisected at the point O. ताले BD भी समान द्विभाजक व्यक्त होची को जगह है? इस जगह है. हला ताले D और लेंथ जहाँ ही थी वो B और लेंथ 20 से यहाँ ही थी. हाँ कि नहीं? Suppose ये BD टा माने करो 10 centimeter है जहाँ था. ताले इधर कितने था? 5 এটা কে দেখানো 5 কেমিতি জানলে 10/2 5 তাহলে কোন জানছে this distance is the half of this 5 টা 10 অধা so this distance is equal to half of the total distance মানে কর এটাই থানতা 20 সেন্টিমিটার তাহলে এর মধ্যে কত থানতা 20/2 যে 10 ही থানতা ये 10 ये 10 বুঝিয়ালা. So this distance is the half of total diagonal BD. Okay. So you can write OD is equal to half of BD. Half of BD. Half means what? By 2. Okay. So BD by 2. BD टा कितने 13. So 13/2. Now divide 13 with 2. 2 5 ja 10. So you find 6.5. So this is the length of OD. Okay, by using the properties of parallelogram, you can find the unknown value OD. Okay.